आणि सुव्यवस्था निर्माणासाठी बुद्ध तत्वज्ञानाची आवश्यकता. 3 वक्ते शोध निबंधकार आपल्या विचारपीठावर आसनस्थ झालेले आहेत. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत डॉक्टर प्रशांतजी पगारे सर आणि ते आपले शोध निबंध या ठिकाणी सादर करणार आहेत. शोध निबंधकारांना विनंती आहे की आपण आपल्या शोध निबंधाचे निष्कर्ष आणि जे काही थोडक्यात सारांश रूपानं आपण ते मांडावेत अशी मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. सर सुरू करेल. तर सुरुवातीला प्राध्यापक सुरुवातीला सन्माननीय सत्राध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पगारे सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः. आजच्या या भोजनोत्तर सत्रामध्ये आपणा सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. हे सत्र सुरू करण्यापूर्वी मी सादरीकरण करताना अशी विनंती करतो की त्यांनी सादरीकरण करण्यापूर्वी साधारणतः नमो तस्स भगवतो अरहतो हे सेंटेन्स म्हणावं. कारण बहुधा ह्या सेंटेन्स पासूनच आपण सुरुवात करत असतो. कोणती कॉन्फरन्स असो, म्हणजे भारतात असो भारताबाहेर असो, हे त्या ठिकाणी माझं निरीक्षण आहे म्हणून मी त्या ठिकाणी सांगत आहे. दुसरी महत्वाची बाब, आपण जे काही सादरीकरण करत असतो शक्यतो करून सादरीकरणाचे एक पॅटर्न सर्वसाधारण सर्वत्र ज्ञात आहे. तो पॅटर्न म्हणजे सपोज मला 100% बोलायचं आहे तर पहिले 10 ते 15% माझं इंट्रोडक्शन असणार आहे रिगार्डिंग आवर टॉपिक. 75% रिगार्डिंग फॉर मेन कॉम्पोनंट मुख्य गाभा त्या संदर्भात असेल आणि लास्टली 10 to 15% फॉर कन्क्लुजन. दिस इज द स्टाईल ऑफ एनी प्रेझेंटेशन, एनीवेअर, एनी कॉन्फरन्स, एनी प्रोग्राम. सो या पद्धतीने आपण एक सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. निश्चितच त्या ठिकाणी योग्य प्रमाणामध्ये होऊन जाईल. कारण या ठिकाणी सादर करताना वेळ, आपला विषय, त्याचबरोबर जे कोणी प्रतिसादकगण आहे त्या प्रतिसादकगणांनी इथे जे काही सादरीकरण करणार आहे त्या अनुषंगानेच आपल्याला काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत. काही तुमच्या मनामध्ये साशंकता असतील, काही त्या संदर्भातले सफलता करायची असेल तर त्या ठिकाणी प्रश्न उत्तर सुद्धा आपण एक प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर लगेच करणार आहोत. कारण त्यामुळे काय होतं की एकदम 3 झाल्यानंतर विचारानंतर पहिल्याचे काही प्रश्न होतात ते आपलं कन्फ्युजन होतं. त्या अनुषंगाने आपण 1 by 1 प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर इमिजिएटली क्वेश्चन अँड आन्सर सेक्शन आपण त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत. आपण या ठिकाणी संवाद साधायला आहोत. या संवादातून सुसंवाद करणार आहोत. विवाद किंवा काही बाबी संदर्भात अपशब्द ही बाब या ठिकाणी नसणार आहे. कारण ते सेमिनारचं एक दर्जामुळे सेमिनार संदर्भातलं एक फॉर्मॅट म्हणूया तो आपण या ठिकाणी पाळूया. पुन्हा एकदा या ठिकाणी मी या सादरीकरणाचे स्वागत करतो. आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. वेलकम टू फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कॉन्फरन्स. वेलकम टू एव्हरीवन. थँक्यू. धन्यवाद सर. यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर रितेश ओहळ सर पुणे आपला शोध निबंध सादर करतील. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय भिक्खू संघ यांना विभाग करतो. तसेच सर्व सन्माननीय प्राध्यापक वर्ग, तसेच सत्राध्यक्ष राहुल सिंग, प्रशांत पगारे सर, सर्वांना माझं सविनय जय भीम. माझा विषय जो आहे तो इंग्लिश मधून पेपर प्रेझेंट करणार आहे. माझा विषय जो आहे सरांनी सांगितलं की अर्ली बुद्धिस्ट अप्रोच टू सायकोलॉजिकल वेलबिंग, म्हणजेच थेरवादी परंपरेनुसार मानसिक आरोग्याविषयीचा दृष्टिकोन. थेरवादी परंपरा ही मानसिक आरोग्याकडे कशा प्रकारे बघते ते मी माझ्या पेपरमध्ये सांगणार आहे. Introduction. Buddhism is often seen
as a primarily dealing with human life problems, whether it may be social, personal, physical, or psychological. It is considered as an important tool for the complete solution to the mental peace. It originated from finding a solution to the problem of suffering, dukkha, and Siddhartha Gautama was responsible for this search. He was the founder of Buddhism and also he was well-known social reformer. At the age of 35, he obtained enlightenment. Buddhism originated in India. It was there that Buddha began to deal with problem of illness. Illness in form of both physical and psychological. Illness begins at birth. When one is born, the peril of sickness begins. The person who has not suffered illness has yet to be born. Only after death does illness cease. We must suffer both mental and physical pain and illness in this life. When, when someone becomes sick, then he must find a doctor for physical illness. But mental illness can be treated properly with Buddhism. It is the mind that operates the body. One who has healthy mind and good attitude will be less affected by physical difficulty than someone who has mental problems. The Buddha's teaching can be seen as a foundation of the Buddhist approach to mental health. The very first two stanzas of Dhammapada says that mind is the foremost and superior of all the phenomena. If a person speaks or acts with an evil mind, then misery follows him just as a wheel of bullock cart follows the oxen steps. On the contrary, if he speaks and acts with calm and restless mind, then happiness follows him just like a shadow. The Buddha's core teaching consists of 4 statements. The first of which emphasizes the reality of suffering. The noble truth of suffering says that birth, old age, sickness, death, grief, lamentation, pain, depression, and agitation are suffering. Associated with what you do not like and being separated from what you like and not being able to get what you want is suffering. In other words, human life is unavoidably associated with situations of suffering. Therefore, physical or mental discomfort can be named suffering. The second noble truth says craving is the cause of suffering. The third noble truth is the cessation of suffering, and fourth noble truth is the way that leads to the cessation of suffering. In medical science, one has to trace out the root of the disease and remove it with the help of medicines. Similarly, in Buddhism, one has to understand the cause of suffering and remove it with the help of Buddha's teachings. Hence, core teachings of the Buddha can be compared to medical diagnosis. Buddha's teachings mostly discusses day-to-day suffering directly, but it also addresses psychological aspect of mental discomfort that can be seen in various forms. Early Buddhism not only discusses physical and psychological health, but also talks about the law of nature. Psychological well-being is depending upon good health, financial stability, social stability, and the highest goal in life. These are the basic requirements for a human being to live life happily. Buddhism never denies the importance of basic requirement. It is necessary to fulfill one's basic needs to understand the Dhamma. It is like a precondition for a properly understanding of the Dhamma. A stanza of Dhammapada says that health is highest gain, satisfaction is highest wealth, trusted people are the best relatives, and salvation is highest bliss. Arogya parma labha santuti parmam dhanam, vissasa parma yati, nibbanam parmam sukham. This was the translation of this verse. Early Buddhist approach to mental peace. And now I am going to discuss the main discussion. One can understand the Buddhist approach to mental health with the help of teachings on a fourth noble truth, which is the way that leads to the cessation of suffering.
It is divided into three parts: Sila, Samadhi, and Panya. We can use this teaching to understand characteristics aspect of the early Buddhist approach. Sila is generally understood as good behavior. It has three basic components: Sambhavacha, Sambhakammantu, Sambhajino. Right speech, right action, and right means of livelihood. In brief, it can be understood as an ethical framework for a person's life. A person who follows the virtue could meditate upon the object properly and knows how to calm the mind. There is no fear for a person whose mind is free from passion and not perplexed, who has abandoned the idea of good and bad and who is mindful. His teachings can be all be taken as a practical advice on how to live well. His teaching applies to today's modern world also. Morality is the foundation of tranquility. Hence, ethical behavior conditions positive mental states. Samadhi as a second part of the Eightfold Noble Path is generally understood as ground to cultivate wisdom. In Pali canon, it explains as a kusalasya chittasya ekagrata samadhi, means concentration of wholesome mind means samadhi. Meditation does not necessarily mean sitting meditation only, but being mindfully doing any kind of work or bodily movement. Bodily movement is meditation, and meditation aims at samadhi to gain panya, wisdom. Then wise man expels indolence by diligence. Having climbed the stronghold of wisdom without sorrow, such a clever one observes a sorrowing crowd as somebody standing on a mountain observes the foolish people on the ground. A positive mental health states only tranquility and peace can be cultivated, which is like precondition to obtain wisdom. Thus, one could maintain the mental peace we strongly attach to our body and mind as well as our habitual views and states. Thus, there is a sense in which we can see all mental problems as a form of addiction to the attachment. And then Panya, I'm talking about the Panya now. Panya as the final element means of right understanding or wisdom. The word means seeing through or seeing deeply. It is also known as seeing thing or a person as it is without preconceived notion or imaginations, etc., which is not possible easily. We all are the common people are in the state of avijja, delusion. So mental ill health is just a more extreme version of a state we all suffer from. Psychotic states are extreme version of common mental states and are based on more extreme clinging to delusional factors, which builds the self structures. Sabbasava Sutta, Bhayabhairava Sutta, and Vampika Sutta of Majjhima Nikaya discuss mental illness according to Theravada Buddhism. Nothing happens without reason, and it talks about many reasons, not only one reason. Diga Nikaya Attakatha, Sumangala Vilasini explains 5 niyamas or 5 aspects of cosmic law. These niyamas deepen our understanding and give meaning to why thing happens. Niyama is Pali term for a cosmic law. The niyama show how certain conditions and law of nature work at different levels of cause and effect. The first niyama, Utu niyama, is the law of physical matter. It is physical, inorganic, and order of existence. Seasonal changes, earthquakes, flood, gravity, and heat are some of the many examples. It roughly embraces the law of physics and chemistry. The second niyama, Bija niyama, is the law of living matter. Physical organic order like cells and genes
whose law are similar to science of biology. And third niyama is kamma niyama. Kamma is the activity of transforming energy through intention, speech and action. The result of this energy transformation is only considered wholesome or skillful if less suffering or no suffering is produced. Karma is the cause and vipaka is the result. It is the principle of conditionality operative on the moral plane. This sequence of cause and consequences replaces divine lawgiver in Buddhism. There is a moral law, but no lawgiver and no one to administer it. This niyama pertains to the world of ethical responsibility. The fourth niyama is Dhamma niyama, is the spiritual or transcendent. This principle of conditionality operates on the spiritual level, the neutral phenomenon that occurs with birth of a Buddha. And reason for Buddhist practice are in this group. This niyama has to do with spiritual laws and governs ultimate reality. The fifth niyama is Chitta niyama, is the mind. Chitta niyama is mind. This niyama implies mental activities such as consciousness, perception, conception, etc. The mental phenomenon arises because of condition. The mind is not independent agent. This is like the science of psychology. The Utu Niyama, Bija Niyama, Karma Niyama, and Chitta Niyama are types of conditionality in the relative sense. So, like emptiness, but Dhamma Niyama, I'm talking about Dhamma Niyama. The Dhamma Niyama has to do with spiritual laws that governs ultimate reality, like emptiness, no self, or our progress through different stages of Buddhist path. Understanding, the next point is understanding causes of mental illness in light of Buddhist doctrine. Psychological discomfort is any disease or condition that influences the way a person thinks, feels, behaves, or relates to others, and it's all his or her surroundings. Although the symptom of mental illness can range from mild to severe and are different depending on the type of mental illness. A person with untreated mental illness often is unable to copy with life's daily routines demands. Although the exact cause of most mental illnesses is known, illnesses are not known. It is becoming clear through research and that many of these conditions are caused by combination of genetic, biological, psychological, and environmental factors, not a personal weakness or character defect. And recovery from mental illness is not simply a matter of will or self-discipline. However, it can be seen that there is a root in Buddhist doctrine while discussing the causation of mental illness. Next point is heredity. I guess time is short, so I will skip some points. Heredity is also one of the topic. And next point is meditation done in wrong way may cause harmful results. This is important point, so I will take it. Meditation done in wrong way may cause harmful results. In this point, psychological trauma, environmental things, condition, that are the main topics. But this is the main discussion actually. I have spent one page on that. I'll skip that. Better to see. And meditation done in wrong way may cause harmful results. At the starting point of Kachayana Vyakarana, the story comes of a certain monk who, after having ordained, got the object of meditation from the Buddha, and the Buddha instructed him to work on Anicca Bhavana and recite the Pali term Udayabhaya, like that, mindfully. Then he had gone near a river
and started reciting the word Udayabhaya, Udayabhaya. But after some time, he saw a crane flying on a river. In Pali term for a river is Udaka, and for a crane it is Baka. So he misunderstood and started speaking Udaka Baka in that way. And after some time, he became insane. He gone wrong. Okay. He recited continuously. After some time, his mind he forgot what he is doing, and so in this way he started reciting Udakabaka instead of Udayabhaya. So certainly meditation done in wrong way can cause harmful result. But if meditation process is right, then there is no chance for harmful result. Firstly, meditation cannot be learned from lectures or books. To learn and practice any kind of meditation, you need to experience, you need to have experienced teacher. In the very beginning, people may try a little very simple breathing meditation from the instruction of the books. But basically, we all need good teacher to make any progressive meditation. Lastly, conclusion. I'm talking about the conclusion now. The Buddhist understanding of psychological calmness, peace, and illness comes from the understanding of psychological process offered by the Buddhist teaching. The Buddha was pragmatic. Offering many practical methods for working with the mental process. The Buddha's teachings can be seen as a foundation of Buddhist approach to mental health. Causality discussed by the modern sciences has its roots in Buddhist doctrine. However, it does not accept mental illness on account of personal weakness or a character defect. On contrary, Buddhism says we are the result of our actions. For example, we find descriptions of working with fear and dread through process resembling desensitizing and desensitization, description of working with fear and in Bhaya Sutta, you can see this working with fear and dread through processing of resembling, etc. We see advice on different strategies for working with distractions and discomfort in Sabbasava Sutta. We see dream analysis in Vammika Sutta and many other discourses on morality and wisdom, which teaches us how to live harmoniously. What Buddhists contribute is richness of direct observation of mental processes and an ethical underpinning that occurs in most ways with the broader ethical views of society. Buddhist contribution of methodologies for calming and focusing the mind is outstanding. So here I conclude. Thank you very much for a kind, patient listening. Open for discussion. If you have any questions with us, आपल्याला प्रश्न असतील मराठीत विचारू शकतात, मराठीत विचारू शकतात, हिंदीत विचारू शकतात. Open for. Thank you. I have also one question. Yes. Thanks, sir. Thanks for nice presentation. Thank you, sir. Because your protocol and great time period you cover this your presentation. But I 100% English studies in Pali more than me. I am not a student. But one question is historical perspective. Because Buddha is founder of the Buddhism. So this is a very controversial statement. As you go to our Buddhist history, Buddha is not founder. Buddha they mentioned Anagato Sanatana Dhamma. So it means Buddha, before Buddha went to India. But we should this matter debate because we can understand this. Other things are also very important, just like same. Mostly people, and they say Buddha.
run away from the home. Due to this is see the old people like that. But Rani's story is different. Abhasa mentioned there. There was a war between river, for the river, water. It was a parliament decision. So Buddha actually expelled from this state or country. So my question is there. You mentioned this 100 of the Buddhism, but I think the Buddha is there. So there is 28 Buddha there. So Buddha is Buddhism is a traditional one, not one man can do. Buddha just like reform it and make it correct, just like a Sikh people, Sikh religion. Many people there, but who combination make it perfect religion. So same way, our Buddhism is Buddha giving it so much faith and progress all over the world. So this is my I like to put it in discussion, please. Yes, संस्थापक काय माहिती बुद्धा भगवान बुद्ध हे संस्थापक आहेत त्यांच्या निश्चितमध्ये मला काय म्हणताय नाही तर काय नाही हात त्याचं काय आपण बुद्ध होऊन गेलो आहे एका ठिकाणी म्हणतात की सर्व बुद्धांचे शासन एक आहे मग बुद्ध हे संस्थापक बुद्धांनी एकच शासन सांगितलं अर्थात बुद्ध होऊन गेले आहेत त्यांनी एकच शासन सांगितलेलं आहे और बुद्धा जो सब पापस सकरण कुशल संपदा सचिंत प्रयोजन और बुद्धाच म्हणजे सर्व बुद्धांनी हेच एक शासन सांगितलं बुद्ध असं म्हणतात की मी म्हणजे पाठीमागीच्या बुद्धांनी ती शिकवण सांगितलेली आहे त्याच बुद्धाचं एक शासन बनते ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिज्म के लिए और पाली के लिए देखा जाए तो दो की लिस्ट तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा उनको सुन से लेके सत्य और दूसरे भी है हम उनको डिनाई कर सकते हैं हम लीगेसी को बैक खत्म कर लें बुद्धा से इंडस वैली से बुद्धिज्म मिला तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो हमें काउंटर डाल करके उनको भारत के जो इतिहास है वो बुद्ध से स्टार्ट होता है जो वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेबल जो हिस्ट्री है उसका सबसे पहले जो जिसको हम प्रूव कर सकते हैं ऐसा इतिहास जो है बुद्ध से स्टार्ट होता है उसके पहले का जो भी है वो लिटरेचर में आया है बहुत सारी बातें है लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो 28 बुद्ध जो संकल्पना है बहुत बाद की बात है सबसे पहले तो एक ही बुद्ध को माना जाता था ऐतिहासिक बुद्ध ऐसा एक रिसर्च हुआ इस पर पीएचडी में पीएचडी की एक चंद्रा बोलते हैं उन्होंने की तो सबसे पहले तो एक ही बुद्ध को ऐतिहासिक बुद्ध को ही मानते थे लेकिन वो संख्या जो है 4 पर गई जो कि वो बाद में 7 पर गई वैदिक धर्म में जो 7 ऋषि जो संकल्पना है वो जो पीरियड है उस समय बुद्ध 7 मानते थे उसके पहले तो सबसे पहले तो एक ही बुद्ध मानते थे अभी क्या लेकिन बाद में का जो पीरियड है टाइम वो 7 बुद्ध मानते थे जब वैदिक धर्म में 7 ऋषि थे बड़े तो वो जो पीरियड है उस समय 7 बुद्ध मानते थे और ये संख्या जो है 24 गई बाद में जो महावीर के साथ कंपटीशन जो होगा कुछ होगा वो 24 है और उसके बाद वो 28 संख्या है आप इस पर एक प्रॉपरली रिसर्च हुआ है आप देख सकते हैं या इसका रेफरेंस में हाजिमे नाकामुरा इनका सर्वे ऑफ बुद्धिज्म जो है उनमें आप देख सकते हैं कि जो उसमें सारे रेफरेंसेस दिए गए आप वो अगर देखेंगे और ये जो बात है बाकी की जो कि बुद्ध ने कहा वो हम विश्वास रखते हैं कि 28 बुद्ध हुए लेकिन हमें जो इतिहास जो अभी हमारा जो इतिहास है भारत का जो 2600 साल पुराना है उसके पहले का कोई मानता नहीं है पूरी दुनिया में आप तो कह रहे 2600 पुराना इतिहास है तो इतिहास क्या है जो हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसी जो बात है जो पूरे वर्ल्ड में आप जो बोल रहे हो वो मिथ है हम आर्कियोलॉजिकल बेस पर कह सकते हैं 28 बुद्ध अब सुनिए आपका जवाब है आपको इतने 28 बुद्ध बता दीजिएगा अभी आपने बुद्धा को काउंटर बताया बुद्धा काउंटर नहीं एक आदमी का काम नहीं कर सकता पूरा हम उनको कंसीडर करते हैं हम उनको समझते हैं आप सुनिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हां ये क्वेश्चन है हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं मेरा टॉपिक भी हिस्ट्री का है जो मैं इसको ढूंढ रहा हूं
ये जो हमारी लेडीज है, जहाँ पर आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, सीधा कहता है टाइप है। और सुनिए, आपको आइडिया नहीं है, आप अपने हिंदू जो हिंदूवादी जो है हिस्ट्री को मत खोलिए, हिस्ट्री निकाला गया ना उसको देखिए। अशोक बुद्ध के 250 साल बाद जाते हैं तो वो कुछ संत का बात देखते हैं, उसको जीर्णोद्धार करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बुद्ध से पहले कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुने बोलने तो दो यार, बात नहीं करने हाँ, बोल। देते इसमें आप डिबेट करिए। डिबेट नहीं करते। ये हारने जीतने का नहीं है, ये बेटर हिस्ट्री नहीं, जब आप मैं जो कह रहा हूँ वो मिथ कह रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं मिथ वो कैसे नहीं है वो बताइए। कंट्रोवर्सी नहीं है ना, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है, पार्टिसिपेंट आप प्रेजेंट करिए, जैसे वी आर एज एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। हाँ, लेमन बात करिए। हाँ, आप जो बात कहना चाहते हैं हाँ, तो एक्सपर्ट की बात कीजिए। अब मैं भी सुन रहा हूँ। बात नहीं करने देना चाहते। आप बात आपने जो लिखा वो सही है। अभी आपने मुझे मैं जो कह रहा हूँ मिथ कह रहे हैं, तो आपने कह रहा है वो मिथ कैसे लिखो आप बताइए। जितना ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, इंडियन हिस्ट्री है, वो मिथ है, नॉट बेस्ड ऑन द साइंस, नॉट बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजी, नॉट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, नॉट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स, बेस्ड ऑन द लिटरेचर संस्कृत। व्हाट हैपेंड? German people translate into Sanskrit, then people come to India, they make a different story. Due to Alexander Cunningham and James Clark, this history be developed. The history based on the Alexander Cunningham. Because उन लोगों ने खोजा, आर्यन को पढ़ करके, हिंद साहब को पढ़ करके, उसके विज्ञापन देखा नहीं। तो विज्ञापन अशोका का कहानी था। अशोका का हिस्ट्री पहले नहीं। अशोका का हिस्ट्री 2600 साल में का है। आप उसके पहले का कुछ रेफरेंस दीजिए तो मैं मानूंगा आपका कि आप जो बोल रहे हैं वो मिथ नहीं है। आपको समझ में पढ़ना चाहिए दोबारा। मैं क्या पढ़ना नहीं, आपको सुनिए। आप 2600 साल जो है आप देंगे तो दो। आप सरकार कहने का मतलब है कि हम जब ट्रेडिशनल अभी तक जो बात बताते आ रहे हैं, हमें डिपेंड्स अपॉन संस्कृत बेस्ड लिटरेचर। व्हाट ऑल राइटर फ्रॉम अभी हम चाणक्य को मानेंगे, पूरा मानेंगे चाणक्य को अब ज्या वेळा बघा आपण हे म्हणतो की हे संज्ञान झालं, त्याच्यात काय म्हणतात एरोमे सिद्ध, असं मी ऐकलं. आनंद जेव्हा सांगतो की एरोमे सिद्ध त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थाने संज्ञान जो हिस्ट्री बेस्ड अभी है, अभी अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होता तो क्या बुद्ध का होता? यूट्यूब अलेक्जेंडर कनिंघम बुद्ध आया और ये जो आपका जैसे इजिप्ट में क्या देखा मैंने, इजिप्ट में रोसिका करके एक वर्ड मिला था एक जगह पर, उसमें उन्होंने जो लैंग्वेज को डेवलप उसको रीराइट किया पड़ा और उन्होंने इकोनॉमिक लिटरेचर और इजिप्ट हिस्ट्री में देखा। हमारा हिस्ट्री जो बोलता है तो डिफरेंट है, इन्होंने हिस्ट्री को रिस्टोरेट किया। अशोका है नहीं, अशोका ये केवल इनका उसमें होता महापुराण से, हिस्ट्री रामायण से महाभारत से होता, पुराण से होता है, और पुराण में जाकर के सूर्य को और उसको बोलते हैं। वो हिस्ट्री डिफरेंट है, तो हमारा पढ़ा जाता है डिफरेंट है, हिस्ट्री नहीं है। वो तो रूलर ने हमें लिख के दिया, आप पढ़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं। जब बीजेपी पावर में आई तो अलग हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाया और चेंज किया, आगे रीडेट कर रहे हैं। अभी जाकर के और यूनिवर्सिटी का भी ड्यूटी इशू हो रहा है, तो हिस्ट्री हमेशा अपने को करने की होती है। अशोका ने आपको हिस्ट्री दिया, बुद्ध को दिया है, और बाबा साहब ने इस चीज को समझा है और काउंटर रेवोल्यूशन जाएगी, इतना नहीं होता। आपका जो लेडीज है, हमारे पास ऐसे फिलोसफर है, वो पढ़ा है, पढ़ करके प्रूव किया है 28 होता है, और हमको उसको मानना है। अपने हिस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करें, हिस्ट्री इम्प्रूवमेंट। कोई क्या लगता है उसे लिख लो, हम अपना नहीं। और जैसे सेकंड कहानी आते हैं, बुद्ध को कहते हैं घर से छोड़ के भागे, आप लोग भी कंट्रोवर्सी है। हाँ, वो भी कंट्रोवर्सी। हाँ, हमको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, अभी मेरे ख्याल से हमें जो लिटरेचर प्राप्त हुआ है, लिखने वाले या की ज्ञान है या कह नहीं सकते, लेकिन लिखा है वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे बढ़ते आ रहे हैं, हमें भी पता नहीं। उनके लिए हमें कुछ फ्लो करना पड़ेगा, कुछ साइंटिफिक थिंकिंग करनी पड़ेगी, और हमारे में से एक्चुअली साइंटिफिक जो उस पर कमिटमेंट होगा, यस दिस इज ट्रू टू गो अहेड विद दिस, ये कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात, हम जो सर्वे ऑफ इंडिया देखते हैं या तो आर्कोलॉजिकल स्टडी जो हम करते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में जो स्टडी करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, ये भी हमें दिखे हम वो जब अभी हमने देखा कि कोर्ट ने फैसला दे दिया ऑटोमेटिक
बाबरी का प्रॉब्लम सॉल्व। इतने सालों तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो अल्पराज ने लिख के दिया इट इज ट्रू। ट्रू देने वाले कौन है? जब पूरी सिस्टम हुआ पाता थी, अंडर सिस्टम कोई सिस्टम चलती हो तो बीबीलाल का रिपोर्ट माना नहीं है इंडिया, ऐसी बात बीबीलाल का रिपोर्ट नहीं माना। ये सच। अरे सच को हमें आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, हमारा सच क्या है कि लोगों के दिल में दिमाग में डालना चाहिए। हमारे दिल और दिमाग में एक ही बात बार बार वही दोहराई जाती है और हम उसके फैन हो जाते हैं और उसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमें क्या लेना देना, ऐसे करते करते हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक का इतिहास हमने देखा है। एक पिक्चर भी था, वो जिसका नाक काटा कौन सा, उसमें वो अल्लाउद्दीन ने सब पुराना इतिहास जला देता था और हम नया इतिहास लिखेंगे। वो जंग हुआ का क्या है? ऐसा भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा भी कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लिखने की ताकत हमें 71 साल से शुरू हुई। इसके पहले कौन लिखने वाले थे, इसने कैसे कैसे लिखा है, ये भी सोचने की बड़ी बात है। कालपर्यंत हमें बात होतो की हा इतिहास लिहिणारे एक ठराविक लोकमत होता, लोक महिलांना सुद्धा जागा नव्हती। ज्यावेळेस घटना आली, घटनेनंतर जी एक विधवा बाई होती, त्या विधवा बाई या देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले। एक विधवा बाई या देशाचं संपूर्ण पंतप्रधान म्हणा, त्या मोठ्या पक्षाचं ते काय करू शकले, मांडे करू शकले। ट्रू हे केव्हा, जेव्हा आपल्याला संविधान प्राप्त झालं तेव्हा। ही जेव्हा बात सत्य आहे, ही सत्य बात जोपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, तो जे अधिकार घेतात, जे मोठ्या मोठ्या पदावर बसतात, राष्ट्रपती होतात, त्यांनाही अजून समजलं नाही का काय, असे प्रश्न कधी कधी माझ्या मनात येतो। आणि ट्रू साठी सांगणार कोण, मांडरच्या काळात झेंडा बांधणार कोण, अशा प्रकारचे प्रश्न सुद्धा कधी कधी माणसाच्या मनात येत असतात। कारण ज्या वेळेस डेमोक्रेसीमध्ये पावर होती वही आगे चलती, त्याचबरोबर जास्तीत जास्त गण त्याचा आहे, तो गण त्या दिशेने वोटिंग करत असतो आणि ते वोटिंग हे ट्रू मानत असतो। तर आपण ते सिद्ध केलं, आपण म्हणतानाच म्हणतो प्लेअरमध्ये आम्ही सर्व भारतीय आहोत, त्या पद्धतीने चालणार। त्यामुळे ज्याच्यातून ते सांगत आहे त्या 0.05 वर्ड असेल, 0.5 सिग्निफिकन्स लेवल जरी असेल, आपण तो रिसर्च यू कॅन हे पण ट्रू आहे। तरी सुद्धा ते जास्तीत जास्त जसा महावंश म्हणा, त्याच्यामध्ये त्यांनी पालीचं ट्रान्सलेशन त्याच्यामध्ये केलं नाही। अशा या ग्रीक जपान म्हणा या लोकांना सुद्धा ट्रूनेस त्या ठिकाणी जो पण आपण सांगत नाही, ते जो पण मांडत नाही, तो इंटरनॅशनल लेवल आपण आता खूप संदर्भात जो पण मांडणार नाही, तो परत हे ट्रू होणार नाही, हे पण तितकेच आहे। त्या अनुषंगाने यू कैन जस्ट जो क्वेश्चन हमने खड़ा किया, एक क्वेश्चन के बारे में हम कैसे आगे बढ़े, ये बड़ी बात है। और उसका एंगल बहुत सारे होते हैं, एक एंगल से हमें देखना है, मल्टीपल एंगल देखना है। जो पर्यंत आपण मल्टीपल एंगल पाहणार नाही, सायंटिफिक बघणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला एक उत्तर सुद्धा भेटणार। आता सायकोलॉजी म्हटलं तर फर्स्ट एवढे से इज द माइंड ऑफ सायन्स, आफ्टर वन इट इज बिहेवियर ऑफ सायन्स। तर बिहेवियर किती बघणार आहे, माणसाचं वर्तन आपण किती बघणार आहे। वर्तन मी आहे तो पण चांगला दिसतो, मी गेला मला अपशब्द बाहेर बोलत असते, यू कॅन डोंट काउंट और डोंट मेजर युअर बिहेवियर। म्हणजे आपला वर्तनाचा विश्वास आहे केला व्हॉट इज सायकोलॉजी, नाउ डेफिनेशन इट इज अ बिहेवियर ऑफ सायन्स। आणि सायन्स केव्हा आपण प्रूव्ह म्हणू शकतो की वर्गात मुलं आले 10 तास येतात, वाजता टीचर इज ग्रेट, पण त्यानंतर घरी अभ्यास करतात का, त्या पद्धतीने करतात का, आपण म्हटलं त्या ठिकाणी उत्पन्न करतात का, हा भाग नाही। म्हणून त्या ठिकाणी बिहेवियर कसं आहे, आपण देखा हे तितकंच करायचं, हे सुद्धा सत्य। तरी सुद्धा आपण त्यात पाहून घेऊ सर्व आम्ही काय आहात, आम्ही सगळं खरं बोलणार आहोत, पण सगळंच खरं बोलणार, सगळंच खरं बोलतात, त्यातला एक पॉईंट होतो की पण बाबा आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेऊया। एक चांगला प्रश्न या ठिकाणी सरांनी मांडलेला आहे, निश्चितच आपण सर्वजण त्या पद्धतीने म्हणूया। संस्थापक आहे की नाही आजकाल करा, संस्थापक म्हणण्यामध्ये काय सगळ्या त्या ठिकाणी हक्क निर्माण होतो। पण जसा भंतीने सांगितलं, सभ्य पाप असं, अकरण, कौशल्य असं, उपसंपदा, हे बुद्धानं शासन सांगितलं। बुद्धाचं शासन कोणतं का बुद्ध असतं, म्हणजे 24 असो किंवा नामाचा बुद्ध असो की कोणत्याचा बुद्ध असो ना, कुशल कर्मच तुम्ही करत जा, अकुशल करू नका। हे जर विनय शिकला तर हा विनय तुमच्या धम्मात येईल। म्हणजे कसा आहे आपण पाहिलाय, विनय दोषो धम्मा दोषो, धम्मा दोषो विनय दोषो।
म्हणजे विनयामध्ये दोष धम्मात येतो, धम्मात दोष आला तर विनय ठेवू शकतो. म्हणजे धम्म आणि विनय एकाच नाही दोन बाजू ही बाब आपण समजून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. विनयाचं जेव्हा सांगायला विनयाचं सांगायला म्हणायचं कशासाठी झालं की जोपर्यंत तुमच्यामध्ये विनय येत नाही तोपर्यंत तुम्ही कोणतीही बाब किती केली तुमच्या आचारातून तुमच्या विचारातून तुमच्या वागण्यामधून दिसत नाही तोपर्यंत विनय आहे म्हणून चालत नाही. मी म्हणून अनंत झालो अनंत झालं तर मला पाहता येत कोणी सांगू शकत नाही. मी सांगणार हे इज नॉट गुड दॅट इज नॉट ट्रू बट ते त्यातून समोरचा ज्यावेळेस समोरचा बघतो येस याच्यामध्ये बुद्धाचे गुण हा सत्यवान हा समता दृष्टीचा आहे हा सगळ्यांच्या संदर्भामध्ये करुणाचे भाव मानतो हा सर्वांच्या संदर्भामध्ये आपल्या संदर्भामध्ये असणारे प्रेमाचे भाव मानतो साक्षात सगळ्यांचं कल्याण सगळं विश्वाचं प्राण ही बाब बघतो अशी जेव्हा असेल तेव्हा येस हा काय हा बुद्ध हा शुद्ध असं तो खऱ्या अर्थाने शुद्ध असं तो बुद्ध असो तो व्यक्ती कोण असो तो कोणत्या जातीचा असो कोणत्या धर्माचा असो कोणत्या वर्णाचा असो ही बाब त्या ठिकाणी ही बाब आपण या ठिकाणी काहीशी कोऱ्याच्या पद्धतीने या दोन्ही प्रश्नात बरोबर चांगला आहे चांगल्या पद्धतीने सायकोलॉजीच्या दृष्टिकोन तुम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करा. निश्चितच अशा पद्धतीने आपण हे विवेचन होणं महत्वाचं आहे कारण सांगायला त्या अर्थ अठ्ठ्या कसं म्हणजे काय त्या संदर्भामध्ये असणारं भाष्य आहे आणि भाष्य आपण पाहिलं आहे की बुद्धिझम मध्ये असं कोणत्या प्रकारचं टीका टिप्पण नाही जितक्या इतर सर्व धर्मग्रंथात तिथे हे आहे कसं तू आहे का इतकी त्याच्यामध्ये शक्यता संभावना त्याच लोकांनी घेतले हे तितकंच सत्य त्या अनुषंगाने आपण पाहतो की बुद्धिझम मधलं त्रिपिटकामध्ये असं कोणतंच हे नाही की त्याच्यामध्ये सत्यता नाही त्याच्यामध्ये थोडं ऑल इज प्युअर आणि इट इज श्युअर ही बाब थँक्यू सर. और सारे एक दो चीज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. जैसे अभी साहब ने बोला ना एक्चुअली हिस्टोरिकल फैक्ट होता है वो ट्विस्ट किया था. अभी हमें सोचना पड़ेगा ओपन माइंड से कि उन्होंने जो लिखा है बुक को लास्ट बुक क्यों बना लिया उसके पीछे उनका अपना पहला अपनी थ्योरी को पीछे लगाना है. सनातन पद हमारा है हम का उसको चुरा लिया हिंदू सनातन बोलता है और हमारा सनातन भगवान ले लिया भगवान हमारा है वहाँ ले लिया तो बुद्ध को उनसे काटा है. बुद्ध एक लीगेसी है तो उनको बुद्ध को छोटा करना चाहता है बिकॉज वी वांट टू मेक इट पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म हिंदू सेगमेंट का पार्ट बनाने के लिए ऐसा करना चाहता है. लेकिन जैनिज्म फाइट करता है. जैनिज्म यानी हमारा तो फैक्ट या तीर्थंकर हुए वो तीर्थंकर उनके तीर्थंकर हमें बड़ा कोशिश होना पड़ेगा इमोशनल फैक्टर के लिए. रूलिंग क्लास है उसका आइडिया क्या है उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जिसको लिखा बुद्ध को गाली दिया आज भोसले को गाली दिया संस्कृत में क्यों संस्कृत का संस्कृत कब का है हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे तो 10वीं शताब्दी के बाद इमर्ज होता है. आप पाणी जोड़ेंगे पाणी भर्ती है हमें हिस्ट्री को रिराइट करने का काम हम खुद कर रहे हैं. अभी देखना होगा कि जो हमारा रूलिंग क्लास है जो हमें रूलिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है आइडियोलॉजिकल कल्चर पहले बना रखा है उसका इंटेंशन क्या है बिहाइंड द सीन क्या है वो हमें लेके बोलना है. ये हमारा मतलब है. ठीक है अच्छी विषय हिस्ट्री के बात आती है देयर इज अ क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. क्रिटिसिज्म मींस इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. सपोज ये 50 साल पहले है लेकिन 50 साल पहले हाउ कैन यू से बिफोर 15 इयर्स ये हमको प्रूव करना चाहिए ये ओके ये लगा है 50 साल का है मोबाइल दिख रहा है ये भी 50 साल का है ओके बट व्हाट अबाउट इंटरनल उसका कलर उसका लैंग्वेज उसका सेंटेंस ये भी सब हमें जानना चाहिए. अभी मेरा सब कुछ होना चाहिए वो जानता होंगे. अभी मेरठ के पास में एक जगह वहाँ पर एग्जीबिशन किया है वो ऐसे आर्ट के निकालने का कोई एक भी नहीं. आप जैसे करें कोई बात अपने को पूरा प्राचीन बताएंगे. अभी आपका जो सोमनाथ का टेम्पल है बड़गांव जो गुजरात का है तो वहाँ पर बुद्ध निकल रहे हैं तो अभी मतलब बुद्ध का उन्होंने बिल्कुल इमेज खत्म करने की तारीफ उनका इंटेंशन अपना हमारा इंटेंशन अपना होना चाहिए. और साइंस बेस्ड आर्कियोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में तो बुद्ध 28 विषय है उसकी गाथा में है. और राइटर हम अभी मैं भाग गया था हंगरी में बुडापेस्ट कहती है बुडापेस्ट बाकी कहते हैं बुडापेस्ट बुद्धा से मतलब पूरा यूरोप की बुद्धिज्म है. अभी रिसेंट बुक्स आए हैं यूरोप अमेरिका में बुद्धिस्ट था और मैं इजिप्ट में होके आया हूँ वहाँ अशोक है अलेक्जेंड्रिया
एक्चुअली अब हम ये करेंगे तो आपको भी इतिहास रहेगी। ओके, थैंक यू। तो हमें इस सोचने का एक मंच है, हम सोचेंगे हमारी सोच बदल जाएगी और सोच बदल जाएंगे कि हम कुछ कर पाएंगे। स्टुडिओ नहीं भारतवर्ष 60 वर्ष पूर्ण आपण नालंदा तक्षशिला म्हणत होतो की याच्यामध्ये असणार एक भंडार होतं पुरे वर्ल्ड वाईड। ऑक्सफोर्ड आता म्हणता पूर्वीच ऑक्सफोर्ड नालंदा तक्षशिला हे आपण सांगत नव्हतो आणि ते जळायला मला आपलं काय आपण फक्त ऐकतो मी सुद्धा ऐकतो वाचतो पण ज्या ठिकाणी मला ॲनालिसिस करायला त्या ठिकाणचे असणार ॲक्सेसिबिलिटी ही सुद्धा तितकीच महत्त्वाची। ती ॲक्सेसिबिलिटी आपल्याला भेटू शकत नाही हे पण बाब तितकीच महत्त्वाची। यानंतर या संवादानंतर दिलीप वासनिक सर रत्नागिरीहून आलेले आहेत। ते विपश्यना शंका आणि समाधान शोध निबंधकारांना विनंती आहे की फक्त सारांश आपण आपल्या निबंधाचा मांडायचा। इमाय धम्मान् धम्मपरिवर्त्य बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मान् धम्मपरिवर्त्य धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मान् धम्मपरिवर्त्य संघं पूजयामि। अच्छा, आज आपण या ठिकाणी ही 6वी राष्ट्रीय पाली असं राष्ट्रीय आपली पाली परिषद या पाली परिषदेसाठी आजच्या या सत्राचे अध्यक्ष माननीय पगारे सर, उपस्थित मंचावर असणारे डिबेटर, आजच्या या परिषदेचे प्रमुख अतिथी शेख साहब, बनते कश्यपायन थेरो महाथेरो, त्याचप्रमाणे सत्यपाल बनते महाथेरो आणि उपस्थित सर्व आजच्या या सत्रासाठी असलेले सर्व धम्म बांधव। माझा जो विषय आहे या परिषदेत तो म्हणजे विपश्यना शंका समाधान। आपल्याला सर्वांना माहित आहे की विपश्यना ही भारताची जी सर्वप्रथम जिचा शोध बुद्धांनी लावला हे आपल्याला सर्वांना माहित आहे की बुद्धांनी शोध लावल्यानंतर ज्यावेळेस आपल्या भारताची एक महान विद्या आहे, ज्यावेळेस सम्राट अशोकाचा नातू त्याची हत्या झाली, हत्या झाल्यानंतर आपल्याला सर्वांना माहित आहे की त्यावेळेस जी भिक्षू होती ते त्या इतर देशामध्ये या ठिकाणी त्यांनी काहींची हत्या झाली आणि हीच विद्या आपल्याला माहित आहे की शेजारच्या देशामध्ये ती टिकून राहिली ब्रह्मदेशामध्ये आणि त्या देशाची म्हणायला हरकत नाही की आपल्या देशावर हा मोठे उपकार आहे। माझा जो विषय आहे तो विपश्यना शंका समाधान। विपश्यना ही प्राचीन भारताची विद्या आहे। ही सुमारे 20,000 वर्षापूर्वी भगवान बुद्धांनी शोधून काढली। सम्राट अशोकाचा नातू ध्वजर याची पुष्पमित्र शृंगार यात्रा केली, त्यामुळे देशातील भिक्खू शेजारी देशात गेले, त्यामुळे आपल्या देशातील विद्या लुप्त झाली। शेजारच्या ब्रह्मदेशाने तिला सुरक्षित ठेवले। शांती कुणाला नको आहे, सगळेच अशांत आहेत, अस्वस्थ आहेत, व्याकुळ आहेत, दुःखी आहेत। कुणालाही दुःख आहे तर कुणाला ते दुःख आहे। या दुःखामधून बाहेर कसे पडावे, दुःखापासून सुटका कशी करावी, म्हणजे सुख शांती कसे जीवन जगता येईल याचे मार्गदर्शन विपश्यना या विद्येमध्ये सांगितले आहे। विपश्यना दुःखमुक्तीचा मार्ग आहे। विपश्यना म्हणजे स्वतःला जाणणे किंवा विशेष रूपाने अनुभवणे होय। जेव्हा एखादी गोष्ट ग्रहणक्रियांच्या संपर्कात येते तेव्हा त्याचा मनाशी स्पर्श होतो
आणि त्यामुळे वेदनी